Welcome back to my channel. I am Garima Singh signing in for today's video. Today we'll be doing about the cross effect. It means how the price of the related goods. When I say related goods, it could be of two types, substitute good or the complementary good. How this related goods price affect the demand. Okay. In my previous video, I have told you about the concept of demand, law of demand. Okay, so now let's study how the cross price effect happens in the economy and how these related goods affect the demand. So when I say cross price effect, मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्रॉस मतलब एक दूसरे की वजह से क्या प्राइस इफेक्ट, एक दूसरे की प्राइस का इफेक्ट क्या पड़ेगा ऑन द टोटल डिमांड. ओके, सो हियर क्रॉस प्राइस इफेक्ट विल बी डिफाइंड एज effect of change in price of related goods. Related goods means substitute good or the complementary good. Okay, अगर substitute good या complementary good का price change होगा तो how it will lead to the change in demand. Okay, so this is called as the cross price effect. Now when we talk about the cross price effect, it can be divided into two categories, as related goods are of two types, substitute good or the complementary good. When I say substitute good, it means which can be used interchangeably. एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकते हैं. जिन गुड्स का यूज एक दूसरे की जगह किया जा सकता है. ओके, those goods are called substitute goods. एग्जाम्पल टी और कॉफी. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ मैं टी कंज्यूम करती हूँ और मुझे पता है टी का सब्सटीट्यूट क्या है दूसरा, कॉफी. ओके, तो अगर मुझे पता चलेगा कि कॉफी के प्राइस इंक्रीज हो गए, सो विल स्टडी हाउ माय डिमांड फॉर द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी टी will be changed. Okay, now coming to the complementary goods. Complementary goods are the goods which complete each other or complement each other. Okay, when I say complete each other, example जैसे लेंगे shoe and laces. Okay, those shoes which comes with the laces, अगर उनके laces ही ना मिले तो shoes are incomplete. Therefore here shoes and laces will be the complementary things. Okay, another example is pen and ink. ओके, पेन हम लिखते हैं, इंक खत्म हो जाती है तो इंक रिफिल कर सकते हैं इंक पेन में. तो हियर पेन एंड इंक विल बी अनदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो विल स्टडी हाउ द चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विल लीड टू द चेंज इन द डिमांड ऑफ ओन कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग. सो नाउ लेट्स स्टडी द वेरी फर्स्ट थिंग, चेंज इन डिमांड in relation to or with respect to the change in price of the substitute goods. अभी मैंने आपको बताया substitute goods क्या होते हैं. Now let's see the graphical representation so that you have a clear idea what I am talking about. Okay, so this is my graph and this is my demand curve of tea. Okay, on my y-axis I have price and x-axis I have the quantity. And the price of the tea, that the commodity I am consuming right now, is supposed to be constant. Okay, मैं जो commodity for example टी में कंज्यूम कर रही हूँ तो टी के मैं प्राइस चेंज नहीं एज्यूम करूंगी, टी के प्राइस सेम ही है. ओके, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि टी के डिमांड कर्व कैसे चेंज हुआ क्योंकि हमारे सब्स्टिट्यूट गुड ऑफ कॉफी के प्राइस चेंज हो गए. ठीक है ना, तो हम समझेंगे जैसे अर्लियर आई वॉज ऑन डिमांड कर्व डी. मैं पहले इस डिमांड कर्व पे थी एंड आई वॉज कंज्यूमिंग T1 क्वांटिटी ऑफ द टी. Okay, but I figured out that the prices of coffee, my substitute good, has increased in the market. So this will lead me to increase more of the tea. पहले हो सकता है जब मैं टी कंज्यूम कर रही थी तो कुछ परसेंट में कॉफी भी ले आती थी घर में. ओके, लेकिन अब मुझे पता चला है कि कॉफी के प्राइस इंक्रीज हो गए तो मैं कॉफी को कैंसिल आउट करके आई गो फॉर ऑल दी टी. ओके, मैं जाके ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ टी बाय करूंगी क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं, क्वांटिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर इंक्रीज एज द प्राइस गोज डाउन. ओके, दैट वाज फॉर इट्स ओन गुड. लेकिन अब बात कर रहे हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड की, तो यहाँ भी सेम ही रहेगा हमारा. अब सब्स्टिट्यूट गुड के हमारे प्राइस इंक्रीज हो गया तो मेरी टी की कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाएगी. Therefore I'll shift rightward. Rightward shift कब होते हैं हम, when there is increase in the price of substitute good.
जब सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, देन विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड. ओके, so therefore coming on to a new demand curve called DD1. Now I am at the point D where I consume T2 of the quantity. So you can see my quantity of the consumption or the in terms of consumption or in terms of T, quantity has increased. Okay, earlier I was on T1 and now I am on T2. Okay, so from the above figure, what did we get to know? DD is the demand curve of T, and when I shifted to rightward side, which was my new demand curve, which was D1 was my new demand curve. Okay, now what we have learned that when the price of coffee or the price of substitute good increased, you need to see here price and substitute good are the keywords. जब मेरे substitute goods के price increase होंगे तो मेरी डिमांड ऑफ विच कमोडिटी, ऑन कमोडिटी जो कि मैं अभी कंज्यूम कर रही थी, on commodity that was T increased. Okay, therefore leading to the shift in demand curve from D to D1 with its own price constant. खुद के T के प्राइस के बारे में तो हमने बात ही नहीं की, आज हमने बात की है सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के बारे में. ओके, तो खुद का own price was constant and this was one case. Now we'll study the leftward shift and the case will become vice versa. So talking about this second thing here कि अब मेरे डिमांड का अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. ओके, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा? तब मेरे डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड हो गए. अगर मैं बोलूं मुझे पता चला है कॉफी के प्राइस गिर गए हैं, कॉफी के प्राइस कम हो गए, ऑब्वियसली द डिमांड विल इंक्रीज, देयरफॉर मेरी टी की कंजम्पशन कम हो जाएगी, आई विल गो एंड बाय मोर ऑफ कॉफी. देयरफॉर पहले मेरी डिमांड का डीडी थी, ड्यू टू द डिक्रीज इन प्राइस ऑफ माय सब्स्टिट्यूट गुड which was T, my demand curve shifted towards the leftward side, and earlier I was consuming T1 quantity, but due to the decrease in the price of substitute good, I have changed the quantity and my quantity decreased from T1 to T2. I hope this is clear to you all. This was the two kind, rightward shift and the leftward shift in the demand curve due to the change in the price of the substitute goods. Okay, the second case here is what will if happen to our demand if the price of the complementary goods changes. Okay, जैसे हमें पता है substitute good क्या है, एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं. ओके, लेकिन complementary goods क्या है? कंप्लीट करता है गुड को एक, है ना. therefore यहाँ केस उल्टा हो जाएगा. do not get confused between substitute good and the complementary good. Always remember substitute good मतलब दूसरा गुड यूज किया जा सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो कमोडिटी जो गुड तुम कंज्यूम कर रहे हो उसको कंप्लीट करेगा ये, ठीक है ना. तो therefore the concept will be totally opposite here. Let's see how. So we have price on the y-axis and quantity on the x-axis. Okay, so earlier I was on demand DD. Okay, ड्यू टू लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ पेन एंड इंक. पहले मैं पेन की इतनी क्वांटिटी T1 कमोडिटी डिमांड कर रही थी, लेकिन जब मुझे पता चला इंक के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं. ओके, इंक क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड है पेन का. अब मुझे पता है कि अगर मैं इंक महंगी हो गई है तो मतलब मेरा जो मेंटेनेंस ऑफ पेन है वो भी महंगा हो गया. देयरफॉर आई विल ट्राई एंड स्विच. मैं सोचूंगी ना पेन की जगह why to waste so much of money if price of the ink is so high, why not I switch to other medium of something which can help me to write. Therefore I'll go and buy more of pencils. पेंसिल खरीदूंगी या दूसरे पेन खरीदूंगी जिसमें इंक की इतनी रिक्वायरमेंट ना रहे. ओके, therefore earlier I was on demand DD पे थी, लेकिन क्योंकि मेरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस इंक्रीज हो गए, this will lead to the leftward shift in my demand curve and I'll come on a new demand curve called DD1. Okay, so पहले मैं T1 क्वांटिटी कंज्यूम कर रही थी, क्योंकि मेरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस इंक्रीज हो गए तो मेरी क्वांटिटी जो मेरी कमोडिटी है वो महंगी हो जाएगी, उसकी मेंटेनेंस करनी मुझे महंगी हो गई है. देयरफॉर मैं उसकी कंजम्पशन कम करके अपनी क्वांटिटी कम कर देती हूँ, T2 पे आ जाती हूँ.
Okay, so if there is increase in the price of the complementary good, it will lead to the leftward मतलब डिमांड कम हो जाएगी मेरी खुद की कमोडिटी की. Okay, now so as we have seen that DD was my demand curve and my new demand curve was DD1. Okay, leftward shift क्यों आया? Shift leftward due to the increase in the price of my complementary good. मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज हुआ तो मेरी जो डिमांड है ऑफ माय ओन गुड वो डिक्रीज हो गई. देयरफॉर आई शिफ्टेड टू न्यू डिमांड कर्व D1. अर्लियर मेरी क्वांटिटी T1 थी, अब मेरी क्वांटिटी कम होके T2 हो गई. ओके, तो एग्जांपल लिया था मैंने अब पेन और इंक का. पेन की जो डिमांड पहले ज्यादा थी लेकिन मुझे पता चला इंक की प्राइसेस इंक्रीज हो गए. इंक हियर इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड. इनके प्राइस इंक्रीज हुए तो दिस विल लीड टू द इम्पैक्ट ऑन द पेन्स डिमांड. देयरफॉर पेन की डिमांड विल डिमिनिश. दिस इज हाउ द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड विल लीड टू द चेंज इन डिमांड ऑफ द कमोडिटी. So similarly, the rightward shift happen here in case of complementary good. Rightward shift क्यों होगा? जब मेरा प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, अब पहले I was on DD. मेरी डिमांड का ये था, क्वांटिटी मेरी T1 थी. मुझे पता चला इंक के प्राइसेस कम हो गए. Therefore, my demand for my pen will increase and leading the consumer to shift to a new demand curve towards the right hand side, which will give me the rightward shift. क्यों? क्योंकि मेरी डिक्रीज इन प्राइसेस हुए हैं. ओके, नाउ आई विल बी ऑन ए न्यू डिमांड कर्व D1 and here the quantity has been increased to T2. Okay, so why did this happen? This shift, the rightward shift happened due to the decrease in the price of the complementary good. Example सेम ही रहेगा, पेन और इंक. इंक के अगर प्राइस मेरे कम हुए, this will lead to the increase in the demand of my commodity which was my pen. So now let's understand the relationship between the income and demand. अभी तक हमने डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ा कि गुड्स कैसे चेंज करेंगे डिमांड को. अनदर फैक्टर हियर इज इनकम. अब हम देखेंगे कंज्यूमर की इनकम कैसे डिमांड को चेंज करती है. ओके, तो पहले इन जनरल बात करेंगे. इन जनरल किसी की इनकम इंक्रीज हुई. ओके, इफ आई से माय इनकम इंक्रीज्ड. ओके, सो इफ देयर इज इंक्रीज इन माय इनकम, दिस विल लीड मी टू बाय मोर ऑफ गुड्स. अब जो पहले मैं कॉम्प्रोमाइज करके रह रही थी क्योंकि मेरी इनकम वाज नॉट दैट गुड, नाउ आई गो एंड बाय मोर ऑफ गुड्स दैट आई वांटेड टू बाय अर्लियर. दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट, बट एज वी हैव स्टडीड दैट देयर आर एक्सेप्शंस टू इट आल्सो, सो we'll be learning about the exception. But before that you guys need to keep in mind, जब किसी की इनकम इंक्रीज होती है तो नंबर वन स्टेप इज द कंज्यूमर विल ऑलवेज गो एंड डिस्कार्ड द इंफीरियर गुड्स. पहले अपनी लिस्ट से इंफीरियर गुड्स को आउट करेगा. ओके, उसके बाद सेकेंड स्टेप हिल स्विच टू द नॉर्मल गुड. अब वो नॉर्मल गुड पे आएगा. ओके, सो आपको एक चीज तो क्लियर हुई होगी यहाँ पे कि व्हेन विल टॉक अबाउट द इनकम, विल टॉक अबाउट द टू गुड्स, बेसिकली द इंफीरियर गुड एंड द नॉर्मल गुड. नॉर्मल गुड तो हमारे लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, whereas inferior good is the exception to the law of demand. अभी बोला था ना एक्सेप्शंस भी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे. Therefore we'll study how the change in income will lead to the change in demands of the normal good and the inferior good. So now let's see that when we talk about income and the number of goods that one can buy from the income, the goods can be divided into two categories. Okay, so normal good and the inferior good. As we have studied, exception to law of demand are various, but in your book we'll go by your book, and as there are only two goods are given, we'll do only these two goods. Okay, so number one is normal good and other is inferior goods. Okay, when I say normal good means increase in income will lead to increase in demand. Okay, मेरी जैसे से इनकम इंक्रीज होगी, नॉर्मल गुड की डिमांड भी इंक्रीज होगी. इट मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. एक इंक्रीज हुआ, दूसरा इंक्रीज हो रहा है. देयरफॉर इट शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ. नाउ टॉकिंग अबाउट द इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड्स मीन्स व्हेन माय इनकम विल इंक्रीज द डिमांड विल डिक्रीज. इट मीन्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं.
एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है. Therefore, it shows the negative relationship between the both. Now coming on to the graphical representation, first we'll talk about the normal good. Okay, as you all know, जब हम इन different factors की बात करते हैं other than the price, तो उस केस में हम price को we assume that price do not change. Okay, so on my y-axis I have price and x-axis I have my quantity. Now if I was on demand DD, नॉर्मल गुड की बात कर रही हूँ, मेरी इनकम इंक्रीज हुई तो आई शिफ्ट टू द राइटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि नॉर्मल गुड के केस में अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड फॉर द गुड विल इंक्रीज, देयरफॉर लीडिंग टू द राइटवर्ड शिफ्ट. राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगी एंड आई विल कम ऑन द डिमांड D1. बट इफ माई इनकम डिक्रीजेस, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है, इनकम डिक्रीज होगी तो मेरी डिमांड भी डिक्रीज होगी, बोथ विल गो इन द सेम डायरेक्शन. Therefore, I switch to the leftward side. Okay, leftward shift होगा and I'll come to the new demand curve called D2. Okay, so you can see that if my income increases, I was on point A, I'll go to point B. But as we have seen, income increase हुआ तो point A to I went to point B, whereas my income decreases, I went point A to point C. अगर मेरा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इट विल बी कॉल्ड द फॉरवर्ड शिफ्ट, मतलब आगे की साइड बढ़े. इफ आई एम फेसिंग अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इट मीन्स मेरा बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है. एंड कीपिंग इन माइंड दैट प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी इज नॉट चेंजिंग. ओके, so now we'll talk about the exception, which is inferior good. So as you all know, inferior good have negative relation with income. इट मीन्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड विल कम डाउन. सो नाउ लेट्स सी द इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. एज ऑलवेज आई हैव प्राइसेस ऑन माय वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑन माय एक्स एक्सिस. सो एज यू नो, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी इज नॉट चेंजिंग, सो प्राइस इज कांस्टेंट. ओके, सो व्हेन आई वाज ऑन डिमांड DD, ये मेरी नॉर्मल डिमांड थी, मैं जो कंज्यूम कर रही थी. Now I'll assume my income increases. इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड मेरी डिक्रीज होगी, तो I'll face a leftward shift. मैं पीछे की साइड आऊंगी क्योंकि मैं इंफीरियर गुड कंज्यूम करना बंद कर दूंगी. इनकम इंक्रीज हुई, I'll go and switch to the normal good. Therefore, demand for the inferior good will decrease, leading to the leftward shift. Okay, so leftward shift कब होगी? When there is increase in income. This is opposite to the case of normal good. So guys, do not get confused. Okay, now when I say my income increased, तो मेरा क्या हुआ था? leftward shift. Other case क्या रहेगा? जब मेरी income decrease होगी. Okay, जब मेरी income decrease होगी, मतलब इसका उल्टा होगा डिमांड में, डिमांड will increase. तो मैं पहले यहाँ थी तो मैं rightward shift करूंगी और आई विल स्टार्ट कंज्यूमिंग, क्योंकि मेरी इनकम पहले से भी कम हो गई है तो अब मैं मोर ऑफ इंफीरियर गुड कंज्यूम कर रही हूँ. देयरफॉर आई विल शिफ्ट टू DD1. सो यू हैव अंडरस्टूड दैट इनकम और डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर इनकम इंक्रीज हुई तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी, इनकम डिक्रीज होगी तो मेरी डिमांड ज्यादा हो जाएगी. Guys, again and again I am mentioning this P star करके here. Why? Because you need to remember the price of the own commodity is not changing. Okay, वो हम पहले कर चुके हैं. अभी हम other factors की बात कर रहे हैं और ये हम बात कर रहे हैं income related. Okay, so price of the own commodity will be same. We have learned income decrease हुई तो demand increase हुई, leading to the rightward shift, which is also called the forward shift in demand curve. जब मेरी इनकम इंक्रीज हुई, leading to the decrease in demand, I'll face a leftward shift called backward shift of demand curve. Now coming to the last factor, which is all about taste and preference of the consumer. When I say taste and preference, मतलब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, अगर मैं कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रही हूँ, I'll consume according to my taste. मुझे क्या चीज पसंद है और मैं क्या चीज प्रेफर करना चाहती हूँ. Okay, so this factor now depends upon individual likes and dislikes. मुझे क्या पसंद है, ना पसंद है.
दूसरा ट्रेंड एंड फैशन, भाई आज के टाइम में क्या चीज फैशन में है, क्या चीज ट्रेंड में है। एंड थर्ड इज क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट, इट मीन्स सर्दी है कि गर्मी है कि मेरा मॉनसून वाला सीजन है। ओके, सो इट विल डिपेंड कि कैसा एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से एक इंडिविजुअल, इन तीनों फैक्टर्स के हिसाब से एक इंडिविजुअल डिमांड करता है किसी भी गुड को। ओके, सो इसका इम्पैक्ट हमारी डिमांड पे कैसा होगा? अगर इम्पैक्ट फेवरेबल है, फेवरेबल मतलब उस कमोडिटी के फेवर में है, उस कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं, उसको हम बोलेंगे फेवरेबल चेंज। अनफेवरेबल मतलब उसके अलावा कंज्यूमर को कुछ और मिल गया है, बेटर कमोडिटी, जिससे कि वो उस कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा, लीडिंग टू द अनफेवरेबल चेंज। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, as always price is assumed to be not changing for the own commodity. Okay, so I was on demand DD. Okay, so अगर मेरा फेवरेबल शिफ्ट होगा इस कमोडिटी के, मैं इसको ज्यादा पसंद करती हूँ, ये बहुत ज्यादा फैशन में है और जिस हिसाब का क्लाइमेट है उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट कमोडिटी है, therefore this will lead to the increase in the demand moving towards the rightward side. rightward side shift को हम क्या बोलते हैं? forward shift और the favorable shift. okay, अगर यही कमोडिटी की जो मैं कंज्यूम कर रही थी वो अभी इतनी डिमांड में नहीं है, फैशन चला गया, अब मुझे वो इतनी खास पसंद नहीं है और क्लाइमेट भी चेंज हो गया। ओके, therefore I will shift to the leftward side, जिसको हम backward shift भी बोलते हैं, and this shift will be known as unfavorable shift. ओके, मतलब जब मैं पॉइंट A पे थी और B पे गई तो फेवरेबल, पॉइंट A से और लेफ्टवर्ड साइड गई पॉइंट C पे, that will be by unfavorable shift. So guys, that's it for the video and we are done with the chapter. Now it's time to tone your brain. These are the 3 questions you guys need to answer in the comment section. And number 1 question for the day is differentiate between the substitute good and the complementary good. Second is write the difference between the normal good and the inferior good. And third is how the demand of good changes in relation to the change in income and change in the taste and preference of the consumer. So that's it for today's video. We are done with the chapter. Guys, do not forget to like, share and subscribe to my channel. It will mean a lot. Apart from that, also press in the thumbs up icon under my video. That's it. Thank you so much for watching the video. Now I am signing off from this video. See you guys very soon.